गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, वणक्कम, जय हिंद, सत श्री अकाल एंड हियर वी गो। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थकमिंग इलेक्शंस इन ताइवान और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं नम्रता हसीजा। नम्रता, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गुड इवनिंग सर। राइट। मैं पहले बताना चाहता हूँ, नम्रता हसीजा जो है वो शी इज researcher in the China Center for Analysis and Study in Delhi, and she is also been to Taiwan quite a number of times. She's also in the Indo-Taiwanese forums, many forums, cultural and otherwise, and strategic forums. And most importantly, she's one of the these days the up and coming young Chinese scholars I've come across, and she has a lot of depth. uh, 15 days back there was one senior journalist of India who spoke a little out of turn and probably a bit irreverently, and Namrata just took him apart, right? And very clearly and very succinctly she took his whole story apart, and I was quite impressed, and that's why I said, look, Namrata, let's talk about anything concerning with China. तो उन्होंने बोला कि भाई हम ताइवान के बारे में बात करेंगे। मैं सबको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आई गिव द फ्लोर टू नम्रता, हम ताइवान के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं आज, राइट? ये पहले हम वो क्लैरिफाई करेंगे नम्रता, फिर मैं आपको लेके आऊंगा। श्योर सर। मैं सबको बताना चाहता हूं, जनवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं ताइवान में। वो इलेक्शंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे बाद में, पर पहले आपको पता है कि एक हफ्ते पहले एक नया मैप निकला है चाइना के बारे में। चाइना ने उस मैप में काफी हद तक इंडिया का इलाका, ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल को हड़प लिया है मैप के ऊपर, ऑन ग्राउंड नहीं, और उसी तरीके ताइवान को भी इंक्लूड कर दिया एज पार्ट ऑफ चाइना। और सब बोलते हैं कि इस यही एक मूल कारण है जिसमें सब बोलते हैं कि इंडिया और ताइवान का कोऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए, राइट? और हाँ, ये ताइवान है, इसके बारे में जब चाहिए हम ये वापस मैप में आएंगे। पर बात यह है कि वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शंस कब होने वाले हैं? 2023 में, 2024 में, जनवरी फरवरी में होने वाले हैं। वो एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जैसे हमारा लोकतंत्र है। इंडिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, और 2024 में यूएसए में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और चाइना में भी कुछ बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव है वगैरह वगैरह हम देखेंगे। जो ये चार पार्टी हैं ताइवान के अंदर, एक्सट्रेनियस पार्टीज, इन सब में चेंज होने वाला है, राइट? और ताइवान के अंदर कुछ चेंज होने वाला है। सो जो आज हम बात करेंगे, इट इज नॉट ओनली अबाउट ताइवान एंड फोर्थकमिंग इलेक्शंस, वी आर गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ताइवान, how it is changing, because that is important for India as to how to deal with the whole situation, right? Okay, we all know about India, so let's discuss something about what's happening in China first with this new map and all that. Namrata, uh, give us your thoughts. We'll have a discussion on that before we enter Taiwan. So let's see what's the Chinese reaction to this whole story, or either the Chinese angle to this whole story. Yeah, over to you, Namrata. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आई थिंक आपने ये जो मैप से स्टार्ट किया है, तो बेसिकली इंडिया में भी रिएक्शन आया है इसका, और इफ़ यू सी चाइना में भी आया है, बिकॉज चाइना में अगर आप वेपो वगैरह फॉलो करें तो देर आर अ लॉट ऑफ वेपो यूजर्स देयर हु आर सेइंग let's take our territory back, why are we waiting and everything. But I also want to tell our listeners, because कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि ये पहली बार चाइना ने ऐसा कोई मैप रिलीज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे चाइना के ऑफिशियल मैप्स 1959-60 से अक्साई चिन तो हमेशा ही पार्ट रहा है,
अरुणाचल प्रदेश बाद में ऐड हुआ है, लद्दाख और सिक्किम भी इंक्लूड किए गए हैं चाइना के मैप। तो ये अलग अलग टाइम पे इन्होंने मैप्स निकाले हैं। और इस मैप के लिए मैं एक एक इंटरव्यू है, ये 2019 का एक इंटरव्यू है, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज रेफर टू इट। वी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन with the Taiwanese yesterday. And then also I mentioned this because everybody was talking about the map and also Chinese designs. Now this interview was given by retired PLA Colonel Liu Mingfu to Ashi Shimbun. This is of course a Japanese news outlet. This was in May 2019, and I think this makes it very clear for India, Taiwan, and other Southeast Asian countries that have a dispute with China. So he was asked, this colonel was asked, Colonel Liu Mingfu, he was asked that about China's territorial claims and what limits would be, like what are it what its limit would be, like where they are going to make concessions. So he said very clearly that map used by the current Chinese government is the clear standard for national sovereignty and territory. This is exactly his words. Now, this implies very clearly, very, very clearly, this is 2019, that East China Sea, you call it Sea of Japan, you call Senkaku Islands or Tiao Islands, South China Sea, Taiwan, India's Ladakh, Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh are all part of China. And he said, we are going to make no concessions. We have grown up reading this map where we have studied that these areas are part of it, and this is the limit. So the limit is all these countries. They are not going to make any concessions. And he also said, he also hinted at the possible use of force, probably in the context of Taiwan, by stating that as time passes, gap in national power with China will become less for the US. So I think this interview gives us a clear understanding as to what Chinese think, because he's a retired PLA general, very well known. He's written a lot of articles and he was interviewed, and through our many interactions with the Chinese, and in fact, when I visited China, even if I've interacted with the students who are listening with us and who are accompanying us, they always tell us that they have been studying this map and they know that these areas are part of it. And when a PLA colonel says that it's non negotiable and there are no limits to it. So I think that should be a hint for everyone, be it India, be it Taiwan, be it all the Southeast Asian countries with China has a dispute. So I think everybody should actually read this interview. And also, there are a number of other interactions that people have had over the years where the Chinese have made it very clear. So the point what you have actually brought out in this map is one China hereafter is no more about just Taiwan and China. It is about this entire new map which they're talking of. Yes, So the first thing which comes to our mind is that we have to content and actually completely throw this one China principle out officially, right? It is just not saying that no one China is what he has put in, they have put in this map, and one yes, China is right. So that's the first thing which you have rightly said. Okay, now that you know the point which is under contention is, and important point आपने जो बनाया है कि उनका राय ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उनका गैप यूएसए के साथ कम होता जाएगा और ये बढ़ते जाएंगे, और ये जब बढ़ते जाएंगे तो यूएसए कम कर सकता है ताइवान को बचाने के लिए, और हम ताइवान को एक न एक दिन हम ले ही लेंगे। पर क्या उसमें कोई बदलाव है? क्योंकि जैसे हमें पता है कि इनका आबादी घट रहा है और बड़ा क्लियर है, बहुत लोगों ने बता दिया कि चाइना का अर्थव्यवस्था सुधरेगा नहीं, और अगले 7 साल तक सुधरने का कोई 7-10 साल तक सुधरने का आशा कम है, और तब तक अगर आबादी घटना शुरू हो गया तो वैसे भी इनका अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा।
तो इस हालत में क्या आप देख रहे हो कि ये सपना जो ताइवान को पाने का, चाहे शक्ति के जरिए या राजनीति के जरिए, कि ये दूर होता जा रहा है? दो चीजें हैं इसमें सर। पहला एक, जो हम मतलब बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो हम बिल्ड कर क्या सकते हैं, करें? है ना। तो मुझ मतलब आई थिंक मैं उन ग्रुप में से हूँ लोगों के जिनको ये फील करता है, जो मैं ये फील करती हूँ कि चाइना ने अभी तक अगर ताइवान पे अटैक नहीं किया है तो वो यूएस की वजह से नहीं किया है। जिस दिन चाइना को लगेगा कि यूएस का पावर इतना डिक्लाइन हो गया है कि हम मिलिट्री फोर्स यूज करके ऑक्यूपाई करेंगे ताइवान को, वो दिन चाहे शी जिनपिंग हो चाहे कोई और हो, दे विल डू वो इट। करेंगे। या वो करेंगे। ओके। सवाल ये पैदा होता है कि जितना डिले यूएस करता जाएगा, द मोर द यूएस delays in having a confrontation with China, I think China is going like this. So US has to confront. If US doesn't, the gap will increase, and that will be a problem not only for the US, for all of us, because this, like I said, it's we discuss about Taiwan, but I always say that before Taiwan, who did they choose to confront? India. It was Doklam that happened, Galwan that happened, CPEC was announced. So, because there they know the US will definitely, at least now, definitely come in some way or the other. But here, of course, they will not come. So, my point is, we've been discussing about Taiwan, but we also have to understand, because everybody says, so what? It's Taiwan. It's that side. It doesn't affect us. It affects us. It's going to change the whole dynamic या ऑन दैट देयर इज नो डाउट। या ऑन दैट because देयर इज नो डाउट। ऑन exactly. दैट, हाँ, वो उसके ऊपर मेरे को डाउट ही नहीं है। मैं विल नॉट गेट इनटू दिस थिंग, बट वहाँ यहाँ दो सिनेरियो आपको मिलते हैं। जो एक सिनेरियो आपने बोला है कि जब वक्त गुजरता जाएगा, द चाइनीज कैपेबिलिटी टू टेक ओवर ताइवान बाय फोर्स विल इंक्रीज, राइट? एक Yes. सिनेरियो ये है। कि दूसरा सिनेरियो ये है कि जैसे वक्त गुजरता जाएगा, द चाइनीज कैपेबिलिटी टू टेक ओवर ताइवान विल डिक्रीज। ये भी है, राइट? ये Uh, इसीलिए इसीलिए ये सिनेरियो है क्योंकि ताइवान भी अपने आप को मजबूत कर रहा है आजकल। उन्होंने भी कुछ करना शुरू कर दिया, और यूएसए का भी कॉम्पिटिटिव फोकस on this whole story has increased, or and USA has started taking certain measures hmm, to offset this problem, and there's a bipartisan political view in China, in USA, that they cannot afford to lose Taiwan, right? So it's not a black and white case कि क्या ये चाइना ये ताइवान को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, क्या hmm. यूएसए ताइवान को डिफेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये दोनों सिनेरियोस हैं, राइट? पर एक Yes, sir. सिनेरियो बड़ा क्लियर है कि चाइना कैन नॉट मेक मच हेडवे अगेंस्ट इंडिया। अभी वो दिन गया, राइट? तो इस हालत में, तो व्हाट विल बी चाइना रवैया, चाइना का क्या रवैया होगा ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ताइवान के अंदर, इससे पहले कि हम ताइवान के अंदर घुसे? सर एक और चीज मैं कहूंगी, क्योंकि हम जब क्या बोलिए सिनेरियो की बोलिए। बात कर रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि चाइना के इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है। यस। सिर्फ इकोनॉमी ही ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे अभी रिसेंट जो छिनकांग का डिसमिसल हुआ है, आई थिंक छिनकांग वाज आउट एंड आउट अ शी जिनपिंग मैन। ओके। He was not a diplomat. He was their intel guy. He was brought into this field by Xi Jinping, handpicked everywhere. He was the one who appointed him. Now, we cannot deny that there is a factional dispute within the Communist Party. There is. Because you also see that Chinkan was removed as a foreign minister but not as a state councillor. So there's a hard bargaining that is going on, and all these stories about his health, about the mistress, whatever, I don't believe in ये that. सब बकवास है ये। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे इकोनॉमी नीचे जाएगी, शी जिनपिंग के खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ेगा पार्टी में या डोमेस्टिक उसमें,
हमारे यहाँ एक कहावत है, जब घर के अंदर इंसान परेशान होता है तो वो बाहर जाके लोगों से लड़ता है, राइट? आप तो ये भी एक ट्रिगर है, जो ऑप्शन हमें ये सोचना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, शी जिनपिंग विल डू समथिंग दैट विल शिफ्ट द फोकस The फ्रॉम इंटरनल focus प्रॉब्लम्स टू एक्सटर्नल। to external. Okay. अब अगर ताइवान को इंडिया के खिलाफ या तो ऑपरेशन होगा कोई, एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हमारे इलेक्शंस पास आएंगे, कुछ ना कुछ इंसिडेंट जरूर होंगे बॉर्डर पे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बिकॉज they don't want this government there, they want to embarrass this government, and they also want to show, सर इतना बिल्डअप कोई क्यों करेगा बॉर्डर पे वापस जाने के लिए? नहीं। दूसरा ऑप्शन है ताइवान। ताइवान को अल्टीमेटली अगर एक ऑल आउट वॉर अगर चाइना करता है, तो उसमें डर क्या है? दैट इट विल नॉट बी अ वॉर बिटवीन चाइना एंड ताइवान, देन इट विल बी अ वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस। तो Yes. शी जिनपिंग ये भी कर सकता है, एक ऑप्शन है कि जो मात्सू, खिनमन और फंगू आइलैंड्स हैं, जो चाइना के इनफैक्ट पास है ना कि ताइवान के, अगर एक आइलैंड भी कैप्चर कर लिया उसके लिए बहुत है, अपने कंट्री के लोगों को ये बताने के लिए कि मैं पहला प्रेसिडेंट हूँ चाइना का जिसने ऐसा कुछ किया है, और इससे अटेंशन भी डाइवर्ट होगा। ये भी एक सिनेरियो है जो हमें ये सोचना चाहिए कि जितना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ही कैन आल्सो एक्सटर्नलाइज द थ्रेट, Yeah. एंड आई ये थिंक दैट आप इज आल्सो वन ऑफ द थ्रेट, वन ऑफ या द सिनेरियोस। या इसमें दो राय नहीं है जो आप बोल रहे हो कि ताइवान को कैप्चर किए बिना ये मात्सू और किनमेन छोटे आइलैंड और जो खास करके चाइना के बहुत नजदीक है, एक आध तो सिर्फ 5-10 किलोमीटर दूरी पे है, तो उनको हड़प सकता है, वो कभी भी कर सकता है। पर बात यह है कि उनको लेने के बाद, उनको लेने से एक तरीके से तो ताइवान के ऊपर अटैक हो गया। जैसे ताइवान के ऊपर अटैक हो गया, और ताइवान रिलेशन एक्ट में जो भी यूएसए ने करना है वहां आके वहां बैठ गया, तो फिर ताइवान तो इनके हाथ से बिल्कुल निकल गया। और डिपेंड। यू नो, I mean, what I'm trying to put across to you is I'm not going against what you said, but I'm only discussing the option. नो नो, ऑफ कोर्स, ऑफ अगर ये कोर्स। ऑप्शन हो गया तो उसका परिणाम पूरा नहीं हो सकता है, राइट? ये ऑप्शन वही है कि एलएसी के ऊपर दो चार जगह टीले पकड़ लो और बैठ जाओ और एम्बेरस इंडिया, उसी एग्जैक्टली। तरीके से एम्बेरस यूएसए, यूएस। बट यूएस, बट दैट माइट लीड टू अ लार्जर लॉस। माइट दैट सर, इज व्हाई वी आर नॉट माइट, श्योर, वी we आर are नॉट not श्योर, sure. बट Might, नो it नो, might, इट so माइट। that is why this is also one of the scenarios. हाँ, दिस वन ऑफ द सिनेरियोस, इसमें कोई राय नहीं है। ये ये सिनेरियो पहले से ही रहा कि शुड जी जिनपिंग एंड चाइना टेक जस्ट द स्मॉल आइलैंड्स एंड लीव द मेन आइलैंड, और टेक द मेन आइलैंड, जब क्योंकि मेन आइलैंड ले लिया तो ये तो वैसे ही है। That the both options are there, and it all depends on the politics, the thinking process, the state of preparation of the armed forces, the Yes, perception of the leaders, whether they want to, whether Xi Jinping wants to, what he wants to do, what he is confident of doing, and what his political play is, mm, and the state of affairs within China. So it's ये बहुत, this is all going to change, right? All this also will be dependent on what will be the outcome of elections in Taiwan, in Thailand. right? जो क्योंकि हमने ये सिर्फ चाइना के ऊपर जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बात किया है। जैसे मैंने पहले बताया, यूएसए में भी चेंज है और इंडिया में भी चेंज होने वाला है, राइट? और इसके तहत ताइवान में भी चेंज होने वाला है। So let's come to now the subject which we started off with, elections in Taiwan. So just give us a background of the elections in Taiwan, and then the political alignments, and then the scenarios. Yeah, all yours. Thank you, sir. I think I was lucky because I was in Taiwan at very crucial junctures. So when Okay. there was elections in 2015, I was there. So when the Hong Kong crisis happened, what impact it had, and I saw a lot of changes, honestly, in Taiwan. So 2014 to 2015, I was there, and that is the time when the elections happened and DPP came to power.
Then again, when Hong Kong crisis happened in 2019, I was there, and 2020 were the elections. I was there. So I think I was lucky because first I got a chance to interact with a lot of people and a range of people, from students to shopkeepers to professors to businessmen, everyone. So because by that time I had a lot of friends. So, and also I saw the scenario in Taiwan, and I think it has changed a lot. And now how that has changed, I'll tell you. uh, Many people in India, they also don't know. I'll just tell you a bit Yeah, of yeah. the history. Why? Because History it will बताइए. give you an idea, the audience an idea, that how KMT was there and what DPP is, and that because that impacts the mindset of people in Taiwan, how they did. So basically, Taiwan was given this name Formosa by the Portuguese because they found it a very beautiful island. Now, in the 14th, 15th century, a lot of migration started happening from Fujian district in mainland China to Taiwan. That is why, in fact, before Chiang Kai shek came to Taiwan, all the old people at that point of time, or all the people at that point of time, spoke only Taiwanese, which is Tiayu, that means Taiwanese language, or Japanese, because they were under the occupation of Japanese for 50 years. So none of them could speak Mandarin. They didn't speak Mandarin. So it was only when all this Second World War happened, Japan left Taiwan, and that is also the time when the democracy movement sprang up in Taiwan. So now they have also created a monument, related to that event, where all the democratic leaders were actually brutally either shot or put down by Chiang Kai-shek from mainland China. That's called the White Terror. So then Chiang Kai-shek ultimately had to leave mainland and he came to Taiwan, and he made Taiwan as a base. So his party was the Kuomintang party that was formed in mainland China, and they came to Taiwan. So for them, Taiwan was just a base, and their ultimate goal was to go back to the mainland and reunify the whole of China. And that is why the official name of Taiwan is Republic of China. Because in mainland, Chiang Kai-shek's government, when it was there, it was called Republic of China. And then 1949 came People's Republic of China in mainland. So now when KMT came, people were forced to read Mandarin. With him came millions of refugees. In fact, if you visit Taiwan, you'll be surprised if you go to National Palace Museum, that has more Chinese artifacts than any museum in whole of China. So Oh, he I carried do. so yeah, he carried those, the original maps that the Chinese say, on the basis of which they claim South China Sea and all these regions, are with the Taiwanese. They are not with the Chinese. So so this is KMT. So when we discuss about KMT, Common Tongue Party, it's called, in Taiwan, usually people say, are you blue or are you green? So blue is pro unification and green is for independence. But even within that, for our audience, मैं ये बताना चाहूंगी कि ब्लू में भी कहते हैं कि तुम डीप ब्लू हो या लाइट ब्लू हो. Okay. मतलब चाइना में जाना चाहते हो, अपने आप को चाइनीज समझते हो, या तुम्हें लगता है कि ताइवान असली चाइना है और हम रीयूनिफाई होंगे. ग्रीन में भी डीप ग्रीन हो, इंडिपेंडेंस के लिए जाना चाहते हो, या लाइट ग्रीन हो कि स्टेटस को जो अभी चल रहा है वो चले. मतलब ये मुझे एक बहुत ही सीनियर ताइवानीज आर्मी ऑफिशियल ने एक बार कहा था. मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने ये मुझसे कहा था कि हमारी अपनी करेंसी है, तुम हमारी कंट्री आती हो, हम तुम्हें वीजा देते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, हम अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट ही तो हैं, तो चिल्लाना क्यों है इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि हम इनवाइट कर रहे हैं फिर चाइना को कि वो रिएक्ट करे. तो सब कुछ तो है हमारे पास, तो चुपचाप बैठे रहो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. तो ये भी एक ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि ये एक ओपिनियन नहीं है. इसीलिए फिर ऑफ कोर्स चियांग kai शेक, उनका बेटा प्रेसिडेंट बने, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ताइवान वाज अंडर डिक्टेटरशिप. बट अराउंड 80s,
आई थिंक ताइवानीज गिव क्रेडिट टू द यूएस, बट आई फील कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे देते हैं वो यूएस को. उनके अपना भी इंटरनली दिस पीपल हैड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड छोटे छोटे मूवमेंट्स होने लगे. एंड अल्टीमेटली इन द 90s दे सॉ द फर्स्ट इलेक्शन दैट हैपेंड. तो मेन जो दो पार्टीज हैं मतलब ताइवान में, वो कॉमनतांग पार्टी है और डीपीपी है. तो कॉमनतांग पार्टी ब्लू है जो प्रो यूनिफिकेशन है, और डीपीपी है जो इंडिपेंडेंस मांगती है चाइना से, वो ग्रीन पार्टी है. ये दो मेन पार्टी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज हैं. अब जो अलग अलग पार्टीज हैं जो बेसिकली ग्रीन, जैसे मैंने कहा ग्रीन पार्टी डीपीपी हो गई, न्यू पावर पार्टी है, ताइवान सॉलिडारिटी यूनियन है, ताइवान स्टेट बिल्डिंग पार्टी है, ग्रीन पार्टी ताइवान है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है. ये सारे कहीं ना कहीं, अगर आप टर्म ये यूज कर सके, प्रो यूनिफिकेशन नहीं है. और फिर आती है जो ब्लू पार्टीज है, जैसे चाइनी ये कॉमनतांग पार्टी हो गई, फिर नॉन पार्टिसन सॉलिडारिटी यूनियन है, फिर पीपल्स फर्स्ट पार्टी है, न्यू पार्टी है, लेबर पार्टी है. तो काफी सारी पार्टीज हैं. बट अब ये पार्टी ये दो पार्टी तो है ही है, और उसके अलावा एक अब आने लगी है जिसको सब लोग कहते हैं व्हाइट पार्टी. तो आप मतलब सब पूछेंगे अब ये व्हाइट पार्टी क्या है. व्हाइट पार्टी है ताइवान पीपल्स पार्टी. ये अब ब्लू ग्रीन और व्हाइट हो गया है. तो जो व्हाइट पार्टी है वो, उसका ये ओपिनियन है कि वी डोंट वांट एनी कन्फ्रंटेशन विद चाइना, एंड बट दे आल्सो डोंट से दैट वी आर पार्ट ऑफ चाइना. तो ये अब तीन मेन मेन पार्टीज हो गई हैं, और इनके तीन जो कैंडिडेट्स हैं, असली फाइट उनके बीच में है. अब चौथा कैंडिडेट जो आ गया है फॉक्सकॉन का चेयरपर्सन, चेयरमैन अभी नया नया. हाँ, आई थिंक लास्ट टाइम भी ही वांटेड टू फाइट एंड ऑल, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ joining hands with KMT or the White Party, he says that he's going to go independent. Now here the what I feel is that White Party, KMT and Terrico, इनका मिलता जुलता है, थोड़ा 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 डिफरेंस है, बट एक मिलता जुलता सा ओपिनियन है कि चाइना को मत छेड़ो और अपना काम करते रहो, ताकि काश मैं शेयर कर पाती, बट एक पोस्टर आया था ताइवानी सोशल मीडिया में. उसमें ये था कि किसी ने ये लिखा था, मेरा ग्रैंडसन मतलब मेरा पोता 2 साल का है, मैं नहीं चाहता कि वो लड़ाई देखे. तो अब ये फाइट जरूर है, लेकिन ताइवान में भी बहुत चेंजेस हैं. जैसे मैंने कहा, मैंने खुद देखा अपने सामने. यूजुअली ताइवान में जब मैं चाइनीज सीख रही थी, आवर प्रोफेसर्स नेवर यूज्ड टू डिस्कस पॉलिटिक्स विद अस. But I was lucky that last semester I had this professor. She was very, I would say, very different from my other professors. She would discuss, she would talk, and I just spoke to her. I was like, who are you going to vote? So she said, I have to vote for DPP. Because what happened to Hong Kong in 2014, this is 2014 when I was talking to her, she was like, what's happening in Hong Kong? I don't want that to happen in Taiwan. So I'm going to vote for DPP. Then a lot of many old people or middle-aged people say that DPP ने हमारे घर तोड़ दिए, because जो youngsters हैं वो प्रो डीपीपी है, प्रो इंडिपेंडेंस है. उनमें जो आइडेंटिटी है वो ताइवानीज आइडेंटिटी है, चाइनीज आइडेंटिटी नहीं है. इस स्टेज पे आ गए कि दे फॉट विद देयर पेरेंट्स. तुम केएमटी को कैसे वोट कर सकते हो when you know that their ultimate aim is to unify with China? We are not Chinese, we are Taiwanese, and they left their homes, they're living separately. तो बहुत ही एक डिवाइड सा है अब मतलब सोसाइटी में. some people feel ultimately हम Chinese हैं, our roots are there, right? That is from where we came. Then I started talking to the taxi drivers and all, because यही लोग होते हैं जो अल्टीमेटली वोट करने जाते हैं इंडिया में भी.
मतलब हम लोग तो फिर भी सोचते हैं किसके लिए वोट करें, सारी पार्टीज तो एक सी है. I spoke to them, vegetable sellers and all. I was like, what do you want? You want independence? You want unification with China? So they said, हमें रोटी खाने के लिए चाहिए. हमारी प्लेट में वो रोटी चाइना दे रही है तो ठीक है, ताइवान दे रहा है तो ठीक है, हमें हमें नहीं उससे कोई प्रॉब्लम है. बिकॉज चाइना, यू ऑल्सो सी दैट चाइना ऑलवेज टारगेट्स whenever something happens, they target the farmers. एग्रीकल्चर बिकॉज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मेनलैंड पे. अभी रिसेंटली उन्होंने मैंगोज बैन कर दिए. तो इस तरह से दे हिट, इस तरह से दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस. इसके अलावा जैसे इंडिया में इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करते हैं, ताइवान में भी है. क्या वो तो करेंगे. यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है. मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस हैव बीन बॉट बाय चाइनीज. दे हैव देयर, इनफैक्ट वांग हुनिंग ने हु जिनताओ को ये पॉलिसी दी थी कि हाउ टू यूनिफाई ताइवान. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही मेट around 10-15 people, MPs from DPP, 10-15 from KMT, to form a new party जो बेसिकली उसका नाम ही न्यू पार्टी है. तो इनका मतलब बेसिकली जो चाइना के लिए काम करे टाइप ऑफ थिंग्स है ना. मतलब है तो डीपीपी के, केएमटी के, बट एक नई पार्टी बना लेते हैं. इनफैक्ट इनका जब ऑफिस रेड हुआ था, दे गॉट मटीरियल फ्रॉम द ऑफिस दैट इन केस चाइना हमला करता है ताइवान पे तो हम चाइना को कैसे सपोर्ट करें, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प देम टेक पावर. ये सारा मटेरियल इनके ऑफिस से मिला था. सो चाइनीज आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देयर इलेक्शंस इन ऑल पॉसिबल वेज. बट like I said, Taiwanese, they have a mind of their own also. Many of them know who they are going to vote. The only thing I feel this time, initially I was thinking it's a very open election this time. Anybody can win. But now I feel DPP has a good chance because White Party, KMT, and Terrico, the votes will be divided. This is what I feel. And ultimately, probably, it's going to help DPP to come back to power. And if you want, मैं थोड़ा सा I can tell you the main candidates. या बोलिए बोलिए, बात करते हैं. Dr. Lai, Dr. Lai, he is from DPP. He's DPP 63 years old. He is going to fight the election, and of course, this is a ruling party. He's currently the vice president of Republic of China. Then he was also the premier from 2017 to 2019, mayor of Tainan. Tainan is the southern province, and he is basically a doctor by profession. Second candidate है Ho Yu-e. Now he is from KMT, 67 years of age. He is currently the mayor of New Taipei City. Now New Taipei City is like जैसे गुड़गांव, नोएडा, थोड़ा सा बाहर थाइपे से, बट बहुत अपकमिंग है. अब सारे लोग ज्यादातर थाइपे में तो बहुत महंगे घर हैं तो न्यू थाइपे सिटी जा रहे हैं. वेरी पॉपुलर, ही इज वेरी पॉपुलर इन हिज एरिया. लाइक what I have been thinking, I have not reached to a conclusion, but अगर कैंपेनिंग जो भी फॉलो कर रहा है वो ये नोटिस करेगा कि इनका मेन जो काम है जो इन्होंने किया है एज द मेयर ऑफ न्यू थाइपे सिटी, वो है पहले न्यू थाइपे सिटी बहुत ही गंदा होता था. जैसे कि शायद नोएडा पहले कोई नहीं जाना चाहता था, पर अब सब रिटायर्ड एम्बेसडर्स, आर्मी ऑफिसर सब नोएडा जा रहे हैं. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया. सो दिस गाय हैज वर्कड अ लॉट. लाइक अब आप न्यू थाइपे सिटी जाएं तो लाइक ही हैज चेंज्ड द फेस. यू सी द buildings, you see the parks, you see like it's beautiful. So that is not being used by his people who are campaigning for him. They are not, the main thing that he has done is not being used. तो मेरे लिए ये बड़ी स्ट्रेंज बात है. मैंने पूरी जिंदगी चाइना स्टडीज पढ़ा है,
लेकिन मैं जाके काम करने लगूं वेस्ट एशिया पे, मतलब नोबडी इज टॉकिंग अबाउट चाइना। या ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द थिंग, एंड ही वाज अ पुलिसमैन बिफोर दैट। So one is a doctor, one is a policeman. Then Taiwan People Party, which I'm saying is the white part. The white party. Mr. Ko won chair. He's the candidate, 64 years old, currently chairman of the Taiwan's People's Party. He is the mayor of Taipei. Former doctor, and he is also some people say that he is also close to Beijing. So because white party also has the same thing, in the sense of KMT, that they also don't want to kind of do any, like, they don't want to come into the way of the Chinese. They will not do any provocative things. Now, right now, Dr. Lai, who's from DPP, he has a very stable lead. Matlab, he's been maintaining his lead, but according to whatever the whatever you call them, like before that people are broadcasting things, and they are saying that स्टेबल लीड तो है, बट जो 40-45% वोट्स चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो शायद मुश्किल है। और बट अब मुझे लगता है हो सकता है, अनलेस वाइट, ब्लू एंड टेरिको आपस में मिल जाए, कोलिजन बना ले या मिल जाए, तो आई थिंक वो लोग पार में आएंगे। बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डीपीपी का काफी लीड है। लेकिन अगर ऑपोजिशन डिवाइडेड रहता है और जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है डीपीपी बहुत ही आराम से जीत जाएगी। Right. So you are given a lot of scenarios by which who will come into power, कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा। और जहां तक अभी आपने बताया वो डीपीपी का लीड है, और जो भी डीपीपी करेगा और जो जिमिलाई करेगा वो चाइना के लिए मंजूर नहीं है, क्योंकि जब ये ये जो इनका ये अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो गए यूएसए, चाइना ने मिसाइल फायरिंग किया, नेवल एक्सरसाइजेस वगैरह किया, और चाइना लगता है कि सब कुछ कर रहा है उसको हराने के लिए, राइट। पर मेरा सवाल यह है कि क्या यूएसए भी नहीं करेगा सब कुछ उसको जिताने के लिए? नहीं, यूएस तो कर रहा है इस समय। अ, मैं कुछ केएमटी के एमपी से मिली थी जब मैं अभी ताइवान गई थी। अ, इसी साल नहीं, लास्ट ईयर गई थी दिसंबर में। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ आर थिंग्स बिटवीन यू एंड द यूएस, बिकॉज यूएस की जो करंट पॉलिसी है वो पूरी तरह से अलाइन होती है डीपीपी की पॉलिसी के साथ। तो यूएस तो डीपीपी को सपोर्ट करेगा ही। सो दे सेड they have been trying to convince the US that for so many years, in fact, when Chiang Kai-shek was there, his son was there, they worked very closely with the Americans. So they said, Yes, we're trying to convince them that we can still work with you. And also, they have opened a new office in Washington, D.C. correct. to have their own lobbies within the US. But I still feel, like I said, because DPP's policy, it aligns with DPP. US, Yeah, currently, whatever they correct. want to do Yeah, or whatever, it is. So I think their support is going to go to DPP. right. They are Okay. trying So everything. जो हमें बड़ा क्लियर आपने दृश्य बना दिया कि ताइवान में इलेक्शंस जो हैं वो बड़ा लोकतांत्रिक होंगे, और ये नहीं कि वो फिक्सिंग टाइप है या कुछ है, एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स स्टिल, Yeah. और विद लीड टू डीपीपी। और दो सवाल है मेरा। पहला सवाल ये है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो इंडिया के ऊपर क्या असर होगा, वो आप डील कर सकते हो। Okay. दूसरा सवाल जो मैं एक पूछना चाहता हूँ, चाहे ये आए या कोई भी आए, कैन ताइवान डिफेंड इटसेल्फ टू इवन सम डिग्री अगेंस्ट चाइना? अगर फोर्स इस्तेमाल कर लिया चाइना तो क्या उनका सोच है कि वी शुड डिफेंड आवरसेल्व्स, या सिर्फ ये देख रहे हैं कि जैसे वहां चाइना वाला आता है तो पीछे देखो यूएसए वाला के आके बोला भाई तुम हमें डिफेंड करो?
क्या उस देश के अंदर वो है जागृति कि हम अपना देश को बचाएंगे या मरेंगे, या बोलेंगे कि भाई चाइना वाला आ गया तो ठीक है, हम नूडल खा के दोनों साथ बैठ जाएंगे। ओके, आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला कि इंडिया के साथ क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, आई थिंक जब से डीपीपी आई है इंडिया ताइवान के रिलेशन ज़्यादा क्लोज हुए हैं, बिकॉज ये भी उनकी जो पॉलिसी है उससे अलाइन करता है। बिकॉज दे ब्रॉट आउट अ न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी दैट वाज to wean away from China in economic terms. And they focused more on Southeast Asia and South Asia. In fact, India was specially mentioned by President Tsai Ing-wen in her speech. So, India has been one of the countries where they have focused a lot. DPP, after coming back to power, be it giving scholarships, having more Indian students, having more things to do with India when it comes to trade, commerce. They also now, they have already have an office in Chennai, but they have got MEA clearance to establish an office in Mumbai. मुंबई, यस। Yeah, so I think that's also a feather in their cap that they have been doing a lot. But it's not that KMT, when KMT was in power, nothing was happening, because I still remember that all these scholarships programs that we talk about, they were initiated by Ambassador Ung, who was in India when KMT was there. And I know a lot of people there in that uh, team that were there who actually worked very hard for India Taiwan relations. So for me, I feel yes, DPP has put in more effort. KMT had also put in effort, but the DPP effort was like more visible. But ultimately, let me tell you, be it DPP, be it KMT, India might be an important country, but for them, the most important areas or regions that they are going to focus on would always be the USA, Europe, and Japan. USA, of course, everybody knows why. The support that they get from the US. Japan also. या And जापान के साथ तो है ही, क्योंकि उनका, मैं सबको बताना चाहता हूँ, जापान ये जो नॉर्दर्न टिप ऑफ ताइवान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर जापान का एक द्वीप है, उसको बोलते हैं यूनिगुनी। ये मैं वो मैप में दिखा देता हूँ, और ये शायद ओके, एक मिनट। या ये जो ऊपर चीलुंग है, जहाँ राइट कॉर्नर टॉप में साउथ ईस्ट चाइना सी लिखा है, उसके कहीं उस जगह पे योनिगुनी लैंड है, योनिगुनी द्वीप है, और वो द्वीप जापानीज का है। और हाल ही में जो चाइना ने एक्सरसाइज किया था, उनका मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह किया था, वो नजदीक आ गए थे यूनिगुनी के, और जिससे जापानीज ने जो है वो उनको, आई वुड से दे वर थ्रेटेंड। इसीलिए जापान has started militarizing these islands, and there is a logic in uh, between Taiwan and Japanese uh, cooperating militarily also. तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट जापान एंड ताइवान फेस अ कॉमन थ्रेट, सिमिलरली ताइवान एंड फिलीपींस के फेस अ कॉमन थ्रेट विद चाइना। तो इसके दिस थिंग इट इज वेरी प्रैक्टिकल टू से कि ये है। एंड हमें भी याद होना चाहिए कि वी आर अ एक्स्ट्रा रीजनल पावर और एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर फॉर ताइवान फ्रॉम दिस एरिया, right? Or we don't have a direct bearing on the geopolitics of exactly. the first island chain, or the East China Sea or the South China Sea, or Yes. we cannot even be the first responders there. We will probably the second or the third responders into this whole situation, right? Or we will be the indirect threat which we can pose to China in case they move towards uh, Taiwan. But that's a different story. तो ये जो आपने बात बताया है बिल्कुल सही बताया है। So, but there is a lot of scope for Taiwan to shift its trade focus to India. Uh,
So how will that change with these elections? And or what do you see this happening with these elections? See, I think as far as trade is concerned, this office that they're getting in Mumbai is going to play a big role, because Mumbai is, after all, India's commercial capital. Yeah, And yeah, from it's no there, doubt. they actually want to invest a lot in Maharashtra, and also, like, basically south of India's, because the Taiwanese feel, I think, like most people, I also support that south of India's is better than doing या business नहीं, in इसमें North डाउट India. नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो काउंसलर है, इनका जो भी है प्रतिनिधि ऑफ दिस ऑफिस इन चेन्नई, मैं उससे मिल चुका हूँ जो एक 1.5 साल पहले, और हमने बात किया है। क्योंकि हम मैं आईआईटी में हूँ, तो उनसे जाके बात किया कि भाई हमारे स्टूडेंट्स आपके इसमें लो, ये जो सेमीकंडक्टर्स बनाने के जो फैब हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दो वगैरह। उसने हेल्प वगैरह किया। और जैसे आपके साथ भी मैं ताइवान के एम्बेसडर जो यहाँ है प्रतिनिधि दिल्ली में, उन आप हम तीनों मिल भी चुके हैं पिछले साल। सो मेरे को दो राय नहीं है कि दे प्रेफर साउथ ऑफ इंडिया। और ये जो मुंबई गए हैं वो, उसमें भी उनका बड़ा लॉजिक सॉलिड है कि ये ही है जो इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट है, जहां वो भी दे Exactly. वांट टू मेक दिस थिंग। तो सवाल ये है कि क्या ये चेंज होगा। और खास करके ये जो टेरिगो है, ये थोड़ा चाइना को लीन करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द बिजनेस इंटरेस्ट वो यहाँ भी अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है। और इसके ऊपर क्या असर होगा, एंड व्हाट डू यू थिंक विल हैपन विद दीज रिलेशंस विद इंडिया, एंड हाउ डज इंडिया हैव टू रिस्पॉन्ड? आई थिंक फॉक्सकॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये मुझसे एक ताइवानीज ने ही कहा था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ताइवान में प्रेसिडेंट कौन है, वो जाके यूएस के प्रेसिडेंट से डायरेक्ट मिल लेता है। तो फॉक्सकॉन को अगर इंडिया में कुछ करना है तो दैट फॉक्सकॉन विल डू इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कि डीपीपी वो इज देयर और और PLT इज देयर। करना है तो जरूर। एंड अभी मीटिंग भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, so they want to do a lot of things, and Foxconn is also, in fact, this is what I heard, that they are doing a lot in, of course, South India, but they're also giving more employment to women in their, या uh, state. So, and if Foxconn has to do anything, I think irrespective whichever party is there, ओके। and तो ये तो है। और आई थिंक आपका एक और सवाल था, वो क्या था? विल ताइवान डिफेंड इटसेल्फ? डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट जो रिसेंट सर्वेज हुए हैं उसके हिसाब से 77% के करीब लोग कहते हैं कि हम डिफेंड करेंगे। बट मैं ऐसे भी लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं कि हम तो पहले ही अपना सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं यूएस, हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो इस तरह के लोग हैं, बट 77% इज अ बिग नंबर। नहीं नहीं, ये इसमें डाउट नहीं है। मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछूंगा। क्या वो एक तो ये वो डिफेंड कर क्या वो डिफेंड करना चाहते हैं? एक तो वो है कि हाँ, मैं डिफेंड करना चाहता हूँ, पर क्या मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ? दूसरी बात है कि बोलना एक है कि एक्चुअली करना कुछ अलग बात है। डू यू सी दैट दे हैव स्टार्टेड upping their defense capabilities? They are. I think all their deals with the US, they are buying more equipment, they are buying latest arms and armaments. So they are also doing a lot when it comes to strengthening themselves. But we also have to realize, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दूंगी जो मैंने बनाया था, एक आर्टिकल लिखा था मैंने, जहां मैंने कंपेयर किया था चाइना और ताइवान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को। तो प्रॉब्लम ये है कि ताइवान अपने आप को बहुत ज्यादा सक्षम कर भी लेगा तो कितना, बिकॉज ताइवान बहुत छोटा आइलैंड है, प्लस नहीं, ओके। अब इसमें दो राय नहीं है। या लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव टू यू आल्सो। इसमें दो राय नहीं है कि ताइवान का मिलिट्री फोर्स बहुत कम है, कैपेबिलिटी कम है वगैरह वगैरह। पर एक्चुअली इफ यू सी एनालाइज द होल थिंग मिलिटरली, you know there's this 200 kilometers of sea. Okay, China does not have the capability of doing an amphibious
this attack. assault across the sea. It has never been done in the history of mankind, Yeah, this kind of a assault. The last assault of this kind was on the Normandy landings in the last century. true. And that was only against anything between 30, 50 to 70 kilometers of Yes. the the English Channel. Yeah. And on those days, when a lot of secrecy could be built in, and that was with a lot of effort of America, UK, and all the allies. It was not All a the simple allies. thing. It was one of the most complicated Yeah, thing. I And know. there was a time at that point of time in the Normandy landings when the Germans could have thrown these landings out, right? And it took a lot. If you read the Normandy landings and the planning behind it, very complicated. Does China have this capability to do so? Because in today's age, whatever China does for these landings, the first thing it has to do is put together a force, and that can't be hidden anymore. That's the first thing. The second thing is China does not have experience of any kind of such landings, any kind of warfare. Yeah. Last was Vietnam. Last Right was before that. Vietnam, and after that they have not. And Yes. all their capabilities are suspect, and their gray zone activities won't help in an amphibious operation, right? And they can do any amount of practice against any islands, but the acid test is when you go into the water, put your foot boots on the water, and you start sinking. The third thing, which is a problem for China, and the big major problem, any amphibious operation has to be sustained logistically. True. So that means you need a logistic base in Taiwan, which is very difficult. It's very difficult. If just the logistic bases are denied by USA to China that which they can do, then Taiwan is no go. And let me tell you, in the Normandy landings, the logistics base was built through floating harbors by USA in the English Channel. In the first few days, till the actual bridgeheads were established, not even bridgeheads, till the breakout started and the bridgeheads stabilized on the four beaches of Normandy landings in Normandy, and supplies started coming on shore, the whole thing was shaky. And in this case, they can't do because the Taiwanese, whether the good thing or bad thing or whichever way you like it, have populated all the landing zones, and that's a huge mess of built up areas. So the Chinese have to start fighting, clear up the built up areas, and have a bridgehead, and then catch a logistics base. It's a very complicated option, right? All this they can succeed only if there is internal dissent within Taiwan, right? The third point is all the beaches in which China, I mean, the last point is that all the beaches which uh, जहाँ ये उतर के एम्फीबियस असॉल्ट कर सकते हैं वो नॉर्थ में नहीं है, वो साउथ में है. साउथ में जो बीचेस वो और उनका लॉजिस्टिक्स बेस भी साउथ में ही है, जो पॉसिबल लॉजिस्टिक्स बेस. तो ये पूरा जो असॉल्ट है वो साउथ से नॉर्थ जाएगा, राइट. और यहाँ मैं ये दोबारा आपको ये आप देखिए, ये जो द्वीप है ना, राइट, ये काओशिंग से लेकर फेंगलोंग तक ये बीचेस हैं तकरीबन, और ताइनान, और यहाँ से साउथ से नॉर्थ जाना पड़ेगा. अगर आप ताइवान का आकार देखोगे नॉर्थ टू साउथ, इनका एक बड़ा रिज लाइन है, राइट. इसके ईस्ट में कोई लैंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज ऑल स्नो कैप्ड आल्सो एट प्लेसेस, इट्स ओवर 9,000 फीट. और यहाँ से बहुत नदियां नीचे आते हैं, आपने खुद देखा होगा. और ये नदियां को पार करने के लिए दे हैव टू डू गो अक्रॉस द ग्रेन ऑफ द कंट्री. तो एक नदी, दूसरा नदी, तीसरा नदी, या रिवुलेट या स्ट्रीम्स जो भी बोलो, इसको पार कर कर करके आगे जाना पड़ेगा. इसमें इनका नानी याद आ जाएगा, ये मैं साफ बताना चाहता हूँ. अगर यहाँ कहीं भी इनको थोड़ा अटक गए तो गए काम से. और लास्ट पॉइंट बात इसमें एक और चीज है कि चाहे ताइवान हो या चाइनीज हो, दोनों इस लड़ाई में नौसिखिए हैं.
दोनों लड़ नहीं सकते, ठीक है। ये है, ये फर्स्ट टाइमर टाइप ऑफ लड़ाई होगा ये, क्योंकि ये सो दिस इज अ बिग इफ। इसीलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि चाइना बड़ा आसानी से ये कर लेगा। और इस पूरे इलाके में, ये पूरा कहानी में, अगर चाइना यूएसए आ थोड़ा जाता है। बहुत भी कर ले तो चाइना का पूरा अपसेट हो जाएगा। सो देयर लॉट ऑफ, तभी ये ऑप्शन डिस्कस होता जाता है कि किनमेन और माचू ले लो और खुश हो जाओ। और उसके एग्जैक्टली। पॉलिटिकल रिpercussions आर आल्सो देयर, आर मेजर मेजर पॉलिटिकल रिpercussions फॉर चाइना इन माय ओपिनियन, if China takes only this, because it represents loss of face, because this such a big China can only take two islands and forsake Taiwan. That will be the end of CCP in many ways. Anyway, these are conjectures. Anything else you want to say before I take a few questions? No, I think we've covered. Though Taiwanese have also, like, because you said the efforts, they're also like increasing. They have 4 months of compulsory military training for boys after they, turn 18. So they're planning to increase that plus to 1 year. And what I heard, they're going to teach them how to use the latest weapons, what the Okay. Americans are giving to Ukraine. So they are going to learn to use those latest weapons to at least defend themselves if time comes. And it's very popular with, it's getting very popular with the youth. Some of course are resisting. So there are, it's a democracy. So but many people are also liking it because they are saying at least if time comes we can at least defend ourselves and our families. So that is also like one of the moves that DPP is doing. Okay. Right, that's fine. So we've covered the whole thing about Taiwan, defendability, China, China's politics, internal politics. Let's take some questions. Right. First question by Kumar is, what is the wish for China? Who's Mr. Z's candidate? Is it Foxconn CEO supported by China? uh I don't think China has any Okay, favorite. wait. Let me give you another thing. There's a view. Yes. I mean, interesting. Ming Wu. He says Fox supported by China. Most ridiculous thing I hear this year. Yeah, see, I'm not saying Foxconn is supported by the Chinese. I never said that. I think he didn't probably hear me properly. What I said is Terrico has very clear views. And his views are that he doesn't want a confrontation with China, right? Which is, I take it as a very positive thing for him. He's a businessman. He has to think about his investments. He's invested heavily in China. He's also invested in Taiwan. So if the two countries go to war, he is also invested in the US. So he would never want any confrontation. So he's a businessman. So I never said that the Chinese support Foxconn, right? Also, because this question that which is Xi Jinping's favorite candidate or what do the Chinese prefer? The Chinese would prefer anyone other than DPP because they have already equated DPP with us with separatist forces. They have already upped, kind of like they called His Holiness the Dalai Lama, uh, Yeah. separatist. This thing they have also started equating DPP with that. So for them, if KMT comes, good because they see. I'll make a point there now. Why? Of course, that's important because KMT actually says and abides by 1992 consensus. Now, 1992 consensus is very important for the Chinese because 1992 consensus says that there is only one China, but both sides have different interpretation, right? And even if the White Party comes, because the White Party also, that is what they say, that he said that in fact the candidate said that the two sides of cross strait are one close family, and he proposed a policy of five mutuals: mutual knowledge, mutual understanding, mutual respect, mutual cooperation, mutual accommodation. And so this is my opinion that for the Chinese, any party other than DPP is good because when KMT was there, they had established. In fact, everybody knows Min Cheo and Xi Jinping met. This is something. This was a big event. Xi Jinping is meeting Min Cheo.
ROC and PRC, they are meeting each other. I think that was a big thing. And KMT, in fact, maximum flights between two countries was when KMT was in power. And the sunflower movement, when it started, because KMT was signing this economic deal, that kind of, when people actually, the youngsters entered the parliament and everything. So that is the time. So KMT has had, like, they had a hotline, if I can say, with the Chinese. So for me, I don't think China has any favorite candidate. Anyone other than DPP is good for them. Okay, that clarifies a lot of things. Okay, there's a question, Vijay. Why are we Indians bothered about Taiwan? If Taiwanese love their country, they know very well what has happened to Hong Kong will also happen to them if they go to China. Yeah, your take. See, that's what I said, that Taiwanese, the thing changed. Probably DPP. It was a very open, like, if all of us who were observing or who know Taiwan politics and all, we knew in 2015 DPP will come. The Hong Kong crisis had a major role. I have seen in my own university demonstrations supporting Hong Kong and saying that, this one country, two systems is a failure. And then again, 2019, the same thing happened. Now, why, as Indians, we should be bothered? Because of the very first thing we discussed. China has ambitions not only for Taiwan, South China Everywhere Sea, else. Ladakh, Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh. We should be bothered. I mean, if people think that after, like, I know there's a lot of if, but, and what happens with Taiwan. But do we think that after Taiwan, if they take Taiwan, they will, Xi Jinping or CCP is going to stop? So we should be bothered. Taiwan is a democracy. We are a democracy. What China is doing, it's very belligerent. What they, I mean, can we forget Galwan 2020? I mean, I don't know if people don't bother about 20 soldiers. For me, even one soldier is important. So Yeah, I think we should be bothered. I mean, that's yeah. my. Let me. Yeah, there's no doubt about it. Let me elucidate it for those people who don't understand this whole story. What Namrata is saying is 100% true. Let me add. If you see the first island chain, Taiwan is the pivot in that first island chain. If that first island chain is broken, the entire Philippine Sea is open to China. The entire South China Sea falls. The day that happens, China becomes a major naval power. Till such time Taiwan doesn't fall, they are stuck in the first island chain. सो अगर आप कोई सोचता है कि ताइवान में कुछ भी हो जाए हमें क्या लेना देना है तो वो बेवकूफ़ी है क्योंकि वो थोड़ा दूर दृष्टि नज़दीक दृष्टि से देखने वाली चीज़ है तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि ताइवान कभी ना गिरे अगर ताइवान गिर गया तो इस इलाके से यूएसए का छुट्टी हो जाएगा अगर इस इलाके से छुट्टी हो जाएगा तो चाइना हावी हो जाएगा उस पूरा इलाके में अगर वो हावी हो जाएगा जैसे नम्रता जी बता रहे हैं कल के दिन वो हमारे ओर आएंगे एक ठीक है ओके ये हमें प्रिवेंट करना चाहिए हम कैसे प्रिवेंट करेंगे वी हैव टू प्रिवेंट इट बाय पोजिंग अ टू फ्रंट थ्रेट टू चाइना चाइना का सोच आजकल ये है और ये हमने पढ़ा है और एनालिसिस भी किया और कल भी मैंने बात किया है जब हमने पीएलए के बारे में बात किया चाइना जो है आजकल चार फ्रंट के बारे में सोचता है एक फ्रंट है साउथ कोरिया एंड जापान का फ्रंट दूसरा फ्रंट है ताइवान जापान यूएसए का फ्रंट तीसरा फ्रंट है हिमालयन फ्रंट और फोर्थ फ्रंट है ऑस्ट्रेलियन ऑकस फ्रंट ये इनका सोच है ये इनका ऑफिशियल सोच है इसमें अगर एक फ्रंट का छुट्टी हो गया तो वो चाइना जो है एक एक फ्रंट को अलग 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 निपट लेगा और यही वो चाहता है और यही हमें उसको करना नहीं चाहिए हर वक्त उसको दो या तीन फ्रंट के से मुकाबला करने की जरूरत है चाइना इतना बड़ा हो गया कि एक देश के पास वो शक्ति नहीं है कि चाइना को कंटेन करे या बंद रखे ओके दूसरी बात
सब यहाँ बोलते हैं अक्साई चीन वापस क्यों नहीं ले सकते हो। अरुणाचल प्रदेश तो हमारे पास ही है, वो मेरी तरफ से चेन्नई तक भी ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकतंत्र है, एक स्टेट है, एक चीफ मिनिस्टर है, वो कभी नहीं जाएगा। पर अक्साई चीन उधर है। अक्साई चीन हमें वापस लाना हमारा एक नेशनल इम्परेटिव है, नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा मुद्दा है, दूर का मुद्दा है। अगर वो वापस लेना है तो कब होगा, उसका उसका मौका कब मिलेगा? उसका मौका तभी मिलेगा जब चाइना जो है ना ताइवान की ओर चले और हार जाए। ताइवान जो जिस दिन फंस गया, सॉरी, चाइना जिस दिन ताइवान के साथ फंस गया लड़ाई में, उस दिन हमें यहाँ ओपन हो जाएगा। अगर आप एक सिनेरियो बिल्डिंग में बताना चाहता हूँ, वो सिनेरियो ये है कि ताइवान चाइना का अर्थव्यवस्था घट रहा है, वो घटता जाए, क्योंकि वो सुधरने का कोई संदेह वो क्या वो अवसर नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को। उसका आबादी घटना शुरू हो जाए, चाइना का अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी सामाजिक अवस्था घट जाए, और उसको टू एक्सटर्नलाइज द इंटरनल प्रॉब्लम्स, China does the foolish thing of going into Taiwan not fully prepared, not right, and get stuck in Taiwan. उस वक्त हमारे लिए एक सुनहरा मौका खुलेगा जब हम अक्साई चीन वापस ले सकते हैं। और ये सिनेरियो हो सकता है आज के दिन 10% ही है उसमें, कल के दिन 20 हो सकता है, कल के दिन 40 हो सकता है। राजनीति में कुछ नहीं बोल सकते। और उस मौका के लिए हमें ताइवान में क्या हो रहा है उसको नस पकड़ना चाहिए। अगर वो हमें नस पकड़ना नहीं आता, इसीलिए ये बातचीत हो रहा है, क्योंकि हमें ताइवान के अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा इसीलिए बताया क्योंकि ये जो सवाल है, ये विजय को मैं समझाना चाहता हूँ कि ताइवान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, ये और कोई सवाल रियली नहीं है। ओके, एक सवाल ले लेते हैं। Why can't Taiwan effectively defend itself considering its small population and land area, given its status as a wealthy and technologically advanced country? इन्होंने बता तो दिया थे वो कोशिश कर रहे हैं, राइट, ये कोशिश कर रहे हैं, and as per Taiwan Relations Act and as per the way things have moved, earlier they couldn't do so for many reasons, but वो कर ही रहे हैं, राइट। ओके, एक और सवाल लेते हैं। आई होप यू हैव टाइम। Yes, sir. Yes, sir. Don't worry. Yeah. I have. How is Ukraine war impacting the Taiwan and China strategy thinking? Uh, Actually, when Ukraine was attacked, when I went to Taiwan after that, honestly, there was panic in Taiwan. Like the people that I interact with, everybody, irrespective of whether they were army officials, whether they were politicians or academicians, everybody was asking the same questions. And I could see that there was a sense of unease, not unease, they were uncomfortable because there were discussions that started happening. The same thing will, the China is going to replicate in Taiwan. Also, because US is now so busy with Ukraine, probably it will not have the time to come and help Taiwan. So, but then there is also another opinion in Taiwan that says that Ukraine is not geographically that important for the US as is Taiwan because of the Yeah. all the things that you just mentioned, sir. Right? The first island chain, everything. So if Taiwan is taken over, we know that China is a nuclear power. Everybody knows who are listening. That's going to open up all the Pacific bases that the US has to Yes. the Chinese. Yeah. 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 No. So there are two discussions in Taiwan. One is, they are reasoning out that probably because of the geographical locations. Second discussion is also there that because of semiconductors, which is so important, that these are the two reasons that US will not
let go of Taiwan, or in the sense that it will not meet the same fate as Ukraine, right? Yeah. Within China, Xi Jinping has faced criticism for supporting Russia. So if people think that in China it's like a monolithic No, it's organization, not. everything is the same, it's not. There are so many people who have written that Xi Jinping is doing very wrong by supporting Russia. There is one very important reason, and I feel I should mention this, uh, is that more than 70% of CCP cadres, their children study In abroad, USA. in In USA, USA. right? In USA. So they have their students studying there. Sorry, children studying there. They have their money there. If US applies sanctions to China, they are going to have it. So, and I'll tell you an example. Carrie Lam, when the Hong Kong Yeah. executive head, CEO. Yeah. her son, yes, her son had to come back overnight from Harvard University. He was doing PhD there. Yeah, So yeah, if yeah, yeah. 70% of those people, many of them told Xi Jinping, many of them wrote articles that this support is wrong. So you have to understand that there are two sides of everything. Even Yeah. within Taiwan, there are two opinions, and in China also there are two opinions. Yeah, then I agree with you completely. And then there's a fact कि जैसे यूक्रेन का लड़ाई चलता रहा चलता रहा चलता रहा है, अब सब ये भी पूछ रहे हैं कि भाई चाइना का भी ये हालत हो गया रशिया जैसे, तो फिर क्या होगा? So Exactly. there are issues. Yeah, ठीक है. एक कोई Ken Singh, he says China can blockade Taiwan for years until Taiwan yields. Let me answer this. It can't. Okay. The moment you blockade Taiwan, there will be a counter blockade by others, and that's the end of China. So don't think that Taiwan blockade is simple. So it's not so simple. Okay. Okay. Right. Let me see if there's any other question. Okay. Let's take this question. We know that Taiwan also agrees to the claims on our land. Given this, how should we engage with them? Uh, I have always said this to my friends in Taiwan. And at many forums, I have said the same thing. In fact, the first article that I wrote in mainstream media in India, I said the same thing. The Taiwanese, by claiming the same things as PRC, right, they are giving legitimacy to PRC's claims. So they have to rethink this. Now, the problem is that's written in their constitution. For changing that, it's not an easy process. And like I said, ROC, Republic of China, the constitution, of course, it's the KMT that wrote it at the sense that point of time. And this is what it is written. And this is what I tell my friends. How can you think that our armed forces are going to engage with you if you also claim the same things as China? So you have to change that. You have to bring a change. Or at least, if you can't change your constitution, start talking about it. Right? You have to engage with Indians. When you talk to them, people like me will bring this point. So I always tell them that this is something that they need to change. Then, if India can convince, or the US can convince Taiwan to let go of their territorial claims, I think that will also help Taiwan Yeah. because they're Uh, kind of supporting PRC in their claims. Okay. Uh, this is obviously from someone outside India. Dangmei, whatever, I can't even. Kang Shin Lepu. China have thousand of strategies to convince Taiwan, but China chose the wrong strategy to convince them. I agree with you completely. China will always choose the wrong strategy. That's the problem of with China. And I see, a lot of questions have been answered and a lot of discussion taking place. And for me, it's a very nice thing that people from outside India are now coming. And I also see some guys from out, a Pakistani has been trolling and he's been irritant. That's why I blocked him off. Right. And they've started trolling, which means Gunner Shot is doing well. ठीक है? So my last request to everyone is please subscribe to Gunner Shot. Please press that bell button and like icon.
and help me grow. And will this thing tomorrow and day after, I will not be putting out anything because we have some official functions in the officers training school which I have to attend. I'll get back to you on Tuesday in the evening. Right, we'll have open session on Tuesday. Okay. Uh, I think we've gone through most of the questions, Namrata. I must thank you for the Thank way you have gone about explaining Taiwan to all of us. And oh yeah, that's nice. Thanks a lot, Tibet monk. So nice of you for this super sticker. And you know, uh, the way you put across everything, the what we have discussed, we've gone into a lot of things about Taiwan which we didn't know, and I'm sure people will understand. And I felt that today's discussion was very important in the larger context. Unless we understand Taiwan well, a lot of our strategies don't fall into place. And you have educated us. I must thank you on that. Your last thank words, and then we'll thank everyone. I'll just thank you also for considering that this is an important thing to be discussed and having me here. And I think we should probably have more discussions on Taiwan or maybe cross strait relations or China internal politics, because uh, there are a lot of misconceptions that we have about China. And we need to clear that, at least for your subscribers and also for people around, that, like we said, discussed, that everybody thinks that whatever Xi Jinping is saying is what's happening inside China. No, it's not like that. At Taiwan, like you also highlighted how important it is. So I think thank you for considering me for this chat. I'd like to also thank all the people who joined us. So thank you, sir. Oh, thanks a lot. We've had a great discussion. We had a free flowing discussion about Taiwan. And I also like to thank all our viewers and those who have been commenting, and a lot of discussion coming in the comments itself, which is very interesting. Fine. I'll meet you on Tuesday evening at 8 o'clock normal time. Till then, good evening and Jai Hind, and have a great evening. Bye.